Jai Shri Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you doing guys? I hope you all guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video I'm going to discuss with you how can we learn English with the help of current knowledge. Because if you have an interest to know what is happening in this world and what is going on and what happened, so in this way you can easily express your thoughts, because if you read newspaper in English, and if you aware about some incident, what is going on, what is happening in this world, so you can easily express your thoughts in English. If some people talking about in a group, and talking about in a particular topic, so if you have some knowledge about this topic, so you can easily express your thoughts, you can easily give your point of view. Okay, so in this way you can express your thoughts in English, and once you do that you can achieve confidence. Once you can achieve confidence, so you find that now English is not difficult for you, now English is not a problem for you, you feel comfortable with the English. Okay, so in this way you can easily improve your English, because at least हम लोगों को at the end we have to speak out with our friends, with our colleagues, with our day to day, when we meet with someone, so we have to speak out. If we have no knowledge about any what is happening in this world and what is going on, so how can you express your thoughts? So in today's video I'm going to discuss with you, I'm going to also give you our demo, because in today nowadays it is going a viral topic that is very trending nowadays, that is controversy between two YouTuber, motivational YouTuber like Sandeep Maheshwari sir and Vivek sir. Okay, so how can we express our thoughts? If you have some knowledge about the topic, so you can easily express your thoughts. So in today's video I'm going to give you demo how can we express our thoughts in a particular topic. Okay, so the controversy goes like that. Vivek sir and Sandeep Maheshwari sir both are very famous motivational YouTuber. We know, everyone, I think everyone have seen their videos, Vivek bindra sir and Sandeep Maheshwari sir. Okay, but before going to the before giving my point of view on this particular on this controversial topic, first I'm going to give you some knowledge about Vivek bindra sir. Who is Vivek bindra sir? Vivek bindra sir, he is a motivational speaker, and he started their YouTube channel on 2013. And initially time they uploaded a video like financial, my marketing and business. Okay, and suddenly his channel going grown up, and he wanted to make their business all around the world. He wanted to spread their business around the world, so he started paid courses. And for this, now this time everything is going to good, but what happened, he started to sell their business course with paid. So he started to appoint ca means hota hai channel partner in every city. एंड सी के नीचे क्या होती है, एक टीम होती है, दैट इज कॉल्ड IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट. Okay, so if you all the pupils, so it सारे यंगस्टर को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उस समय विवेक बिंद्रा सर वाज very big YouTuber, and he is known as a big business tycoon. So everyone wants to like Vivek, become like Vivek bindra sir. Why his channel is was going so good? Because three thing is that his content was very good. Second thing is this, and at that time, initially time, his all the courses were very free. Everyone can achieve their course easily. Okay, not paid, that time free. And third thing is that his way of talking, his communication skill very good.
easy to understand, and that is their communication skill in English easy language. So everyone, there are so many millions में सब्सक्राइबर, 21 सब्सक्राइबर, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, एंड बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया. सो क्या होता क्या था, व्हेन ही स्टार्टेड टू मेक पेड कोर्सेज बाय गिविंग सम मनी एंड गिव पेड कोर्सेज. So for this, the pupil IBTC, IBC, independent business consultant. Independent business consultant बनने के लिए there was no criteria. Everyone who wants to become a businessman, become a good businessman like Vivek Bindra sir, so he came and join the IBC, okay, with paid some huge amount of money. But यहाँ तक तो सब ठीक था, but what happened, the people, ओके, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जो नॉलेजेबल थे, एक्सपीरियंस थे, क्वालिफाइड थे विद देयर फील्ड, सो दे गेन सम नॉलेज, दे ग्रोन अप देयर बिजनेस. बट his यूट्यूब चैनल सोन देखा जाता था आप सब जगह से, पूरे कंट्री से. सो द पीपल, द यंगर्स हु डोंट नो अबाउट एनी नॉलेज, हु डोंट नो व्हाट इज द बिजनेस, हु डोंट नो हाउ टू सेल दिस कोर्स, they also came and joined the IBC. IBC means independent business consultant, and they वो IBC बन गए. अब क्या हुआ, उनका पैसा डूब गया. So he feel like cheated. By a scammer. He thought that it's a scam. Okay, that is the big point. यही एक सबसे बड़ी भूल थी. So he started to refund my money. But हुआ क्या, कंपनी ने मना कर दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना. आपको अगर आपको अपनी मनी रिफंड चाहिए तो आपको इस कोर्स को दूसरे लोगों को बेचना पड़ेगा. सो ही स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर अदर्स यंगस्टर एंड सेल देयर कोर्स. ओके, व्हाट हैपेंड, ये हुआ कि भाई जो उनका पैसा आता था उससे जो उनको कमीशन मिलता था, तो उनका जो पैसा लगा होता वो निकल जाता था. इस तरह से एक बड़ा सा स्कैम बन गया. अब इसको आप स्कैम बोलें या मिस्टेक बोलें, in my point of view, I think it's a mistake. It's a business mistake, a big mistake, big business mistake. Why? Because there are so many poor youngster who wants to like Vivek Bindra sir, who but they can't because of because of low experience, because of their low qualification, because of their everything going to down. But what happened, यहीं पर एक बड़ी चूक हो गई. विवेक बिंद्रा सर को क्या करना चाहिए था, उनका पैसा रिफंड करना चाहिए था. अब नाउ दैट इज अ पूरा ये मैटर है. नाउ वी टॉक अबाउट संदीप माहेश्वरी सर. सो होता क्या है, वन डे संदीप माहेश्वरी सर स्टार्टेड देयर सेशन. सो वन स्टूडेंट रेज अ क्वेश्चन दैट ही वाज चीटेड by someone, and other student also support that yes, it is happened, me too. Okay, and what happened, in that session, Sandeep Maheshwari sir has not taken any name or any YouTuber name, but he uploaded this video on YouTube. ओके, एंड सडनली विवेक बिंदर सर की कंपनी की तरफ से उनको एक लीगल नोटिस भेजा जाता कि आपने ये जो वीडियो अपलोड किया है. उनको धमकी दी जाती है, उनको घर में एम्प्लॉय भेजा जाता है, उनको फ़ोन कॉल की जाते हैं. सो क्या हुआ, ये एक बिग इशू बन गया, कंट्रोवर्सी बन गया. सो दैट इज़ अ कंट्रोवर्सी. ओके, now let's talk about who is wrong and who is right. Okay, so I think Vivek Bindra sir, it's a mistake, it's a business mistake. इतनी बड़ी बिजनेस चल रही थी तो विवेक बिंद्रा सर को
फंड जो है ना, पैसा रिफंड कर देना चाहिए था, क्योंकि देर आर सो मैनी पुअर यंगस्टर जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पे लगाई, जो जिन्होंने कुछ अपने ज़मीन बेची, जिन्होंने अपनी गाड़ी बेची, जिन्होंने एवरीथिंग, बिकॉज दे वांट टू बिकम लाइक अ विवेक बिंद्रा सर, सो ही केम देयर एंड ज्वाइन IBC. ओके, सो दिस इज अ बिग मिस्टेक. अब इसको आप स्कैम करिए या मिस्टेक करिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड्रेस सम यंगस्टर. प्लीज प्लीज, फर्स्ट थिंग इज दैट आप सब कुछ समझ लीजिए, तब कोई कोर्स आप उसको खरीदिए. 500 रुपये लगा के जब तक आप उसमें 2000 नहीं कमा लेते, तो आपको इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ don't use, don't trap any type of scam, any type of scammer. It's not a scam, it's a business mistake. Okay, someone called it's a scam, but I think it's a business mistake. I think it's a policy mistake. Okay, एंड विवेक बिंद्रा सर को क्या करना चाहिए थे, छोटे मुंह बड़ी बातें मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उनको उन गरीबों का पैसा रिफंड कर देना चाहिए था. कुछ करोड़ उनके चले भी जाएंगे, पर गरीबों की दुआएं मिलेगी. उनके घर में अगर थोड़ा पैसा उनका वापस आ गया तो उनकी दुआएं मिलेगी. ये चीज़ यहाँ पे गलती हो गई. सो मार्केट में क्या है, देयर आर 2 परसेप्शन अबाउट विवेक बिंद्रा सर. ही इज़ अ स्कैमर, फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट बाउंस बैक. अगर वो किसी का नुकसान हो गया, उसका पैसा देते हैं, तो वो अपना जो भी इमेज उनकी डाउन हो गई है उसको आप सही कर सकते हो. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट संदीप माहेश्वरी सर. He is a big motivational speaker. He is a, I think I watch his so many videos, वंडरफुल वीडियोस. एंड उन्होंने केवल आवाज़ उठाई, एक आम जनता की आवाज़ उठाई. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था. धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी में बदल गया, बट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने वहाँ पे पीछे नहीं हटे और उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लिया. सो संदीप माहेश्वरी सर, यस यू आर राइट, कीप इट. आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, और अगर आप ही पीछे हट जाओगे तो फिर लोगों को आप मोटिवेट कैसे कर पाओगे. सो हियर आई गेव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक. So I hope you like my video. If you did so please give it a like to share with your friends and family, and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comments. So friends, we will meet you, we will see you in the next video. Till then, Jai Shri Ram.